Hello, all the viewers of Homeo Health Clinic. Hello, all the viewers of Homeo Health Clinic and my friends, my juniors, my colleagues, my senior, as well as the homeopaths and students. I welcome you all on behalf of Homeo Health Clinic on the wonderful live session with a very amazing person. She is as such my colleague, but she is also my guru. जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, बहुत सारे, शी इज अ गाइड ऑफ मी. सो आज हम वेलकम करना चाहते हैं डॉक्टर लिपिका चक्रवर्ती, एंड शी हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस इन होम्योपैथी. एंड सबसे अच्छी चीज क्या है पता है कि शी इज ऑल्सो अ मटेरिया मेडिका professor and HOD since a very long period of time. Now, talking about her achievements, she has done her DHMS in West Bengal in 1997. She has done her BHMS from Udaipur University. She has done her MD in Homeopathic Matra Medica in August 2007. Since then, she has been teaching in multiple colleges as well as being a principal in many colleges. She is recently working with the Pioneer Homeopathic Medical College as an HOD in Matra Medica and a professor. And she is my colleague as well right now because I am also a part of Pioneer Homeopathic Medical College in recent days as a guest faculty. And why we asked and requested Lipika ma'am to be here with this amazing topic of batch flower, the reason behind कि batch flower एक टॉपिक हम हमारे 4th ईयर में हमेशा सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसका यूज अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कर पाते हैं. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का और फॉलोवर्स के क्वेश्चंस आए थे, व्हाट आर बैच फ्लावर्स, उस तरह को कैसे यूज करना चाहिए, वो यूज करने के साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दूसरे मेथड्स यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, कैसे केसेस में हमें बैच फ्लावर का यूज करना चाहिए. तो उन सब चीजों को ध्यान में रखिए. आई हैव फाउंड अ परफेक्ट पर्सन फॉर यू पीपल्स हु हैज अ वास्ट नॉलेज ऑन बैच फ्लावर्स. आई हैव सीन हर OPD which has been working with the batch flower base and got a very wonderful results with all these things. So, and what achievements I would let you know. Ma'am has worked with Baroda Homeopathic Medical College as a professor and HOD. She has worked with the Lakshmiben Homeopathic Medical College as a principal. She has worked with the Sophia Homeopathic Medical College in Gwalior as a principal and professor. She has worked in the Sindhwa Homeopathic Medical College, Sindhwa, in the Department of Matra Medica. She has been a HOD and reader in Narayan Shri Homeopathic Medical College, Bhopal. She has been a demonstrator in the Department of Medica in the LBS Homeopathic Medical College. She was also a demonstrator in the Department of LBS in the Bhopal as well. And right now, she is a HOD and professor in Pioneer Homeopathic Medical College, Vadodara, which is a renowned homeopathic college in Gujarat, where she teaches students
well with the clinical approach in all the cases and how to deal with the Macha Medica and different cases with the different approaches. So, ma'am, Dr. Lipika ma'am, I welcome you heartily from the Homeo Health team and my channel to be a part of this awesome session and enlighten us all with the clinical approach of BACH FLOWER in our practice. Thank you. Good evening, all of you. Thank you, Dr. Varsha, for inviting me in your channel to speak on a topic which is very rarely used by clinicians, specifically our homeopathic physicians, as but being a very wonderful remedy for the treatment of mental disease. So today's topic on which I'm going to speak is approach of BACH FLOWER in mental disorder. Would you please start the video, the Yes. PPT? Yes, ma'am. Going with the PPT. Before we start with the topic, I would like to tell BACH FLOWERs are remedies which are wonderful for treatment of acute mental problems, even acute conditions. In my experience, I've been using this drug from 2006 onwards, and I found it as a very complementary system along with the homeopathic medicine to treat different patients. As we know, 2 years back and still we are facing with the COVID situations, and mostly the COVID people conditions, even the people who did not have the COVID, they're also suffering with a panic state, whether they are going to get the disease, and if they get the disease, they are going to die. The most panic state of the people of whole world was, I'm going to die if I get the disease of COVID. And our medicine, BACH FLOWER medicine, specifically use of rescue remedy and Nimulus, help millions of people to come out from that state of mind. So let me start with the presentation. Approach of BACH FLOWER in the mental disorder. Next. Ma'am, I would like to ask you. Yes. How we generally use the BACH FLOWER, in which type of cases we generally use the BACH FLOWERs in our clinical practice, and how they are made up of, what is the method, what is the science behind it, and in which how to dispense these medicines to a patient, because many of the people know about BACH FLOWER but they do not know कि उसको कैसे यूज करना है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कौन से केसेस में यूज करना है, क्या हम इसको होम्योपैथिक डिल्यूशंस के साथ यूज कर सकते हैं, क्या हमें बायोकेमिक के साथ भी इसका यूसेज कर सकते हैं, shall we use the same like monopharmacy like we are using with the homeopathic practice. ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के दिमाग में आते हैं जब वो बैच फ्लावर का यूज करते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि आप इन सब पॉइंट्स पे एनलाइटन करें, और सेकेंडरी इफ यू कैन गो समवॉट हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स so that everyone can understand. Thank you, ma'am. No, I'll be bilingual, and in my presentation only, I'm going to go through what is BACH FLOWER remedies, the history, discovery, and what are the different types of medicines. That I'll be going one by one in detail. Thank you, Varsha. So let's start with the presentation. What is BACH FLOWER remedies? Can we go on with the slides, please? Third slide. Yes, third slide. Can you see the slide, ma'am? No, I'm only able to see the first slide.
It is not getting changed. No. Is that changing? Yeah, now it has come. Yeah. Okay. So, third number slides. What is BACH flower? So, BACH flower remedies are, they have been around close to 100 years. This system was being evolved, and the brainchild of evolution of this remedy was Dr. Edward Bach, a British physician. Actually, he was a homeopathic doctor, and as like Dr. Hahnemann, he was also dissatisfied with the system of how to come to the totality, because of course, being a homeopathic doctor, we know that coming to a totality and coming to the simillimum takes lot of tedious time and energy. Along with it has a system to be followed, and if it is not, then we call it as a failure. So the same thing happened to Dr. Edwards, and he left everything of his prescription and got disgusted, and then he went to the woods. In the woods means हम वहां पे woods बोलते हैं, हमारे यहाँ पे जंगल बोलते हैं. तो जंगल में वो चले गए. जंगल में जाके उन्होंने क्या किया, डिफरेंट जो फ्लावर्स, जंगली फ्लावर जिसको बोलते हैं वाइल्ड फ्लावर्स, उनको वो देखने लगे. एंड ही फाउंड कि सुबह जब जंगली फ्लावर्स के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स आते हैं, वो ड्यू ड्रॉप्स जब एक्सपोज होते हैं टू द सन, इट हैज सम cosmic power into it. That spiritual essence of the flower he could understand, and gradually he started developing the system of BACH flower. Please go one by one slide. Next slide. Yes. So in 1990 and 1930, at the age of 30, he was walking through the field of the flower, glistering with dew. What I told you. He was very much spiritual in his essence of the flowers, and he found that in the dews, when the flowers were exposed to the sun, it had some healing properties. That actually gave him the starting of the BACH flower concept. BACH flower remedies are widely available, popular form of complementary and alternative medicine developed in 1930s by British physician Edward Bach, which I have already spoken. It is available now in our market also. Many companies in India is also producing the drugs. And in this way, Dr. Bach gradually discovered 38 medicines of the flowers, which he had discovered while traveling in the wood. Bach believed in a truly holistic form of an emotional healing. He was himself also a very strong spiritual person. Next slide. Next slide. Next slide. Is it audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. So he believed to assist the body in the healing itself by providing a positive emotional state that is conducted to the restoration of health, equilibrium, and by acting to catalyze an individual's own internal resources for maintaining balance. According to Dr. Bach, the restoration of the balance could be used for treating any medical condition. However, Bach flowers are commonly used for psychological problems and stress. What Dr. Varsha has asked me, why Bach flowers are being used, how it is being used, what are the main part of
where we are going to use the batch flowers. So I end up that batch flowers are basically used for psychological disorders. As we know, our whole body contains of body and our physical part, mind and body. And if there is any sort of disturbance in the physical as well as the mental sphere, we form into a disease. So, psycho is mind, somatic is physical part. So, psychosomatic conditions are very common nowadays to start any problem. The problem starts from the mind and end up to the physical level, leading into diabetes, hypertension, and these type of different type of diseases which we are nowadays suffering. Nowadays, thyroid is also one of the very strong disease where we have lots of brooding. Mental brooding is very common in thyroid patients. Next slide. So according to you, ma'am, मीन्स कि जहां पर भी मेंटल स्ट्रेस की वजह से फिजिकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, या फिर डिप्रेशन है, कोविड इरा में क्यों बैच फ्लावर मैम ने ज्यादा यूज किया, बिकॉज पीपल ऑल हैड एन फियर कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो वो फियर को हटाने के लिए जहां तक हमने आर्सेनिक का यूज किया है या दूसरी मेडिसिन का यूज किया है डाइल्यूशन फॉर्म में, उतने ही बहुत अच्छी तरीके से हम बैच फ्लावर को भी उनके साथ ब्लेंड करके दे सकते थे। और मैम ने वो चीज को प्रैक्टिकली आईपीडी में यूज किया है एंड मैम हैज गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। वी हैड अ डिस्कशन मेनी अ टाइम फाउंडिंग दैट बैच फ्लावर स्पेशली अ रेमेडी नेम्ड रेस्क्यू रेमेडीज, मैम ने उनका यूज बहुत अच्छे से किया है। तो ये पूरे सेशन में हम यही जानेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका अप्रोच क्या रहता है। तो मैम, shall we proceed further? Yes. So now we are going to now talk on the preparation, which you had asked me, Dr. Varsha. The preparation is very simple. One was, which he had seen, Dr. Batch had seen, that the dews exposed to the sun rays. So, two ways the medicines are prepared. One is the sun method and the other is the boiling method. In the sun method, fully open flowered heads still fresh with dews are floated in the sun surface of the pure spring water on a glass bowl and left for a few hours in the sunshine. That means dews and spring water. Spring water is natural water. उनको glass bowl में रखा जाता है and exposed to the sunshine. धूप में रखा जाती है, धूप से वो energy absorb करती है and that is being prepared. Next method is boiling method to be used for trees and bushes. The branches and the leaves are boiled in water for half an hour. Then they are cooled down. उसको ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करने के बाद उसको स्टेन करते हैं और जो उसकी कंटेंट रहती है, जिसको आयुर्वेदिक में काढ़ा बोलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे काढ़ा नहीं बनती है, यहाँ पे तो वो mother tincture बन जाती है and that is being used because it contains the vibration of the energy of the flower as well as the sun rays. As we know, sun itself has so much of curative energies. Then the liquid is called the mother tincture, is filtered and mixed with brandy. Why brandy? Because it has a preservative nature. As we know, our medicines, homeopathic medicines are being preserved in alcohol. The same concept here also, brandy is being used for the preservation. Next. Now, the most important thing to be learned is the mode of administration and its use. Yes, it is very, very controversy for everybody, whether to use it, how to use it, when to use it. The remedies can be taken orally diluted in a glass of water or applied directly to the point such as the wrist, temple and behind the ear. So very nicely and works very smoothly, you can take this having no hindrance in
either deglutition, or in case of any sort of other problems, as like the allopathic drugs we have, छोटे बच्चे को देना है, बुढ़े को देना है, pregnant woman को देना है, सभी के लिए it is very easy and is palatable form. They can be used in individually or in combination up to 7 other tinctures. 7 tincture को मिला के भी दे सकते हैं. और इसकी सबसे बड़ी फायदा ये है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है हमारी होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ. वी कैन अप्लाई इट विथ होम्योपैथी along with biochemic medicines and also with BACH flower medicines. So homeopathy, it will not hinder the process of treatment. Next. Next slide. ये हेयर मैम ने ये समझाया है कि इसको ओरली भी आप ले सकते हैं पानी के साथ डिसॉल्व करके, या फिर डायरेक्टली आप ले सकते हैं, कुछ पॉइंट्स के ऊपर भी आप इसको रब कर सकते हैं, और उसके अलावा इंडिविजुअल बैच फ्लावर भी आप यूज कर सकते हैं जैसे हम होम्योपैथिक डिलीशंस में करते हैं, या फिर आप इसके 7 मदर टिंचर्स को कंबाइन करके एक सॉल्यूशन बना के भी आप पेशेंट को दे सकते हैं. तो और सेकेंड जो मेरा क्वेश्चन हमेशा रहा है या बहुत सारे होम्योपैथ्स का रहा है कि होम्योपैथिक डाइल्यूशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है या सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं पेशेंट को उसके साथ बैच फ्लावर का यूज कर सकते हैं कि नहीं. तो मैम ने कहा यस यू कैन यूज इट एंड मैम हैज यूज्ड इट वंडरफुली इन हर क्लिनिकल प्रैक्टिस. शी हैज गॉट अ वंडरफुल रिजल्ट्स. ओके, फर्दर गोइंग. इसके बीच में यही बोलना चाह रही थी कि ये मेडिसिन कैन कंट्रोल द एक्यूट कंडीशन ऑफ मेंटल ट्रॉमा. एज फॉर एग्जाम्पल, किसी की घर पे डेथ हो गई है, अचानक डेथ हुई है, सबके घर के एकदम हालत माहौल एकदम गुमसुम हो गया है, और उसके बावजूद भी 1 महीना जो बीत गई है आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन, वो जो मेन पर्सन इन्वॉल्व है और एज फॉर एग्जाम्पल वाइफ, एज फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, उनकी कंडीशन वैसे के वैसे ही रह गई है, वही गुमसुम कंडीशन में, वही अकेलापन, वही दुखी फॉर्म में वो अपनी जिंदगी को जी रहे. इन दिस स्टेट देयर इज अ मेडिसिन, आई हैव यूज्ड इट मेनी टाइम्स इन माय लाइफ, स्टार ऑफ बेथलेहेम. इट रिवर्स बैक द कंडीशन ऑफ द पर्सन and a person can lead his life in a very better way. That very acute state which we know in our homeopathy ignatia, but I have seen the result of star of Bethlehem more than ignatia. While teaching in the college also, I have many times tell that ignatia की more acute remedy is star of Bethlehem, and वो remedy देने के बाद the patient starts responding as like the previous time, the natural way she was or the children's were, and they accept the death of that person in a very natural way. Excuse me, ma'am. I just want to let the viewers understand this PPT will be there in my life for whole life till my channel is there, so that if you want the notes from this you can use it afterwards as well. और अगर आप चाहते हैं कि कुछ points clinical जो मैम अभी दे रहे हैं आप अपनी clinical practice में use कर सकते हैं, please note down that because it would be very useful for you for your clinical practice. Thank you, ma'am. You continue. Thank you. So next slide speaks about it contains no pharmacological relevant remittance of the original flower. As we know in homeopathy also, the crude form is not there and are considered safe to use in combination of other medications, which I have already taught that in combination with homeopathy and also in combination with our biochemic remedies, we can use this medicines, as well as it can be used in a pregnant woman, in a children, in babies, and as well as elderly persons. In regarding elderly person, I would like to give you a tips. Sometimes suddenly their patient goes to coma, and the doctors declare that the patient will be going for coma for 1 month, 2 months, years after years. If you can identify the cause of it and give the patient even application, as Dr. Hahnemann has told, application mesmerism, if we can give it on the part of the body, on the brain,
On the face region, I've seen miraculous results. People coming out of deep coma within 2 to 3 days. This was my personal experience, which I'm sharing with you people. Along with the drugs which they were giving, the medicines of the modern science, if this medicine, even by the mode of olfaction, I have used it, it acts miraculous. So I just want to ask you, ma'am, can we use the batch flower in the olfactory system, as we have read many dilutions in homeopathy as well? Yes, I have used it. Many times I have used the medicines in the olfactory mode and have found marvelous results in patients, those who are in a comatose state, or elderly patients who are not able to talk, not able to even open their mouth. Even I'm not able to put a drop of water also. In those cases, if by the process of olfaction we give the patient, or by external application to the affected part, it gives marvelous results. This is my personal experience on the use of the bachelor remedies. The next point which I would like to discuss is, it has been suggested that bachelors could be dangerous for recovering alcoholism. Yes, this is one of the points, because many of the books of bachelor tells that it can recover a patient who is having addiction. But as because the content of bachelor contains alcohol, which I have already discussed that the brandy is being used. So once you're giving that medicine along with brandy, it is already causing the same effect of alcoholism. So the chances of recovery in case of alcoholic patient goes a bit down in comparison to other addictive process or addictions the patients are going with. Next slide. Next slide. Yes. How it works? According to Dr. Batch, the remedies work through the life force, energy, or vibration. Life force energy, we know it, all of you, us, that life force energy we call in our language as the vital force, or the spiritual force, or the spirit we have within us. In general, we call Atma. Atma is nothing but a force which guides us to move. Even I'm speaking, I'm holding my mobile, I'm talking with you. They are nothing but my life force. So, this remedies also work with the life force or vibration that is transmitted to the flowers to the tincture, because you have two form of preparation. One is sun method, another is boiling. So through boiling, whole of the content is going to the tincture, and through the sun also, the sun gives the energy, and it is the energy absorbs the tincture into absorption into the tincture, making it a very powerful form of treatment pattern. Next slide. Now, here comes the role of different mental or psychological conditions for treating with the bachelor remedies. The slide tells that. Because we are going to talk, my topic was also on the mental conditions, the use of bachelor remedies. Next slide. Batch, Dr. Batch had gone for 38 flower remedies. Each addresses one of the 7 psychological causes of illness. Actually, he had divided the 7 psychological conditions on his 38 remedies, and either by combination or in a single way, he has used it in his practice, as well as we are also using in our day-to-day practice. So, divide it into 7 groups as follows. Next slide. The 7 groups are fear, uncertainty, insufficient interest in present circumstances, loneliness, oversensitive to influence and ideas, despondency or despair, overcare for the welfare of others. So these are one by one
conditions on which the batch flower remedy works. So I'll start with the next slide. The point is for fear. I've put even the photographs. They are beautiful flowers, you know. It is really very, very beautiful to see. When I was searching for the batch flower, I was preparing this presentation. I went to the net and specifically I wanted to see the flowers on which Dr. Batch had worked. And each and every flower has its own definition. So beautiful they are. And so beautifully they act on the human's body to cure the mental state. So the One first point remedy, ma'am, I want to add one thing. Yesterday was a World Earth Day, and we yes, all know the flowers are a beautiful part of this nature and earth. yes, And they definitely have a lot of medicinal power in them. तो आज उसी अर्थ डे के कनेक्शन में हमने ये ब्यूटीफुल एक लेक्चर रखा है आप सबके लिए. तो प्लीज एंजॉय द नेचर एज वेल एज द लर्निंग. थैंक यू मैम. यू thank you, कंटिन्यू. thank you. So the fear remedies are rock rose, mimulus, cherry palm, aspen, and red chestnut. See the beautiful colors. The aspen has such a beautiful color. The red chestnut has such a beautiful color. The cherry palm is also very beautiful. I put a PPT at the last of my presentation to see all the flowers because here it will be a jumbling out. So I have given it to Dr. Varsha. She will be going through all the flowers one by one and you will visualize really what a beautiful concept Dr. Batch had seen while he was in the woods, traveling to find out a new system of therapy. So we start with next slide. Yes. So I start with the rock rose as one of the fear remedy. We know fear means is one of the condition where people goes out of control. The same thing which happened during the COVID. लोगों को जिसको कोविड हुआ भी नहीं है, जरा सा सिम्टम्स आए तो उनके मन में ये डर बैठ गया क्योंकि उन्होंने फर्स्ट फेज में देखा था कि लोग अच्छे इंसान चलते फिरते गए और उनकी बॉडी आई और बॉडी तो आई नहीं, वो भी चली गई डायरेक्टली आपकी बर्निंग घाट में एंड people could not even see their near and dear one. That was a state of fear the patient had suffered during the COVID. So this remedy, extreme fear and terror and nervousness, covers it. What happens? It is a frozen fear. What type of frozen? जैसे अचानक किसी की डेथ हो जाना, अचानक एक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक घर पे अर्थक्वेक हो जाना, जितने भी उनकी सपोर्ट सिस्टम है सब खत्म हो जाना, that is known as frozen fear. When this comes to a person, that there we think of the remedy rock rose or a terror. कोई अचानक कोई आके आपका घर का सामान ले गया, डकैती हो गई, आपका अचानक any terrorist has come to the country. As you remember, the terrorist attack in different times in our countries, even in the Taj Hotel of Mumbai, how the terrorists had created a chaos. Those people who were inside, they have suffered with the terrorist condition and the nervousness, and the remedy rock rose would have been the best to cover the condition. That is, when the person feels terror after a nightmare, the feeling that cannot react or move, वो एकदम फ्रीज हो जाता है, एक जगह पे जाके बैठ जाता है, चल फिर भी नहीं पाता है, उसके दिमाग काम करना बंद कर देता है. Then we can give the patient this remedy. Next remedy would be mimulus. This is another excellent remedy which I had been using during the COVID period. I have used this remedy many of the time to many of the COVID patients because it is an anticipation of fearful event. मुझे COVID हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा.
मेरे परिवार की खत्म हो जाएंगे. My family is not going to stay with me. My mother is going to die because she has got COVID. My father is going to die. My near and dear ones are going to die. The effect of anticipation of fear. This is another psychological condition which every individual faced with COVID had faced. It's still facing. अभी भी बहुत सारे कंट्री में लॉकडाउन चल रहे हैं. लॉकडाउन चालू कर दिया. It is a state of anticipation, you know. है कुछ भी नहीं, but it's a state of anticipation, and that anticipation can be covered with the drug Mimulus in a very, very excellent way. Next drug I would like to talk on, that is cherry palm. Threatening impulse, fear of losing control. मैं खो जाऊंगा, मेरा जॉब खत्म हो जाएगा, मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूं, मेरी प्रिंसिपलशिप चली जाएगी. दिस इज, मेरी पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरी दुनिया की जो मेरे बच्चे हैं वो मर जाएंगे. दीज आर द स्टेट ऑफ थ्रेटनिंग इम्पल्स जो हमें बहुत ज्यादा महसूस होती है हमारे डे टू डे लाइफ में. एंड उसके कारण people go into tantrums. I've really seen people going into tantrums. मैंने देखा है पागलपन, मेरी जॉब चली जाएगी, तुम लोग ऐसे कर रहे हो, मेरी जॉब चली जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा जॉब चले जाएगा तो मेरे बच्चे को कैसे पालन करूंगा. This is a tantrum again and again has seen in different people, and if then they break down after severe tantrum, they break down, then they start using abusive words क्योंकि they go out of control. उनको ये लगता है कि मेरी जिंदगी की लॉस ऑफ कंट्रोल हो रही है, मैं इतनी उम्र में आके अभी फिर से जीरो से चालू करूंगा. दिस इज द प्लेस वेयर दे गो इनटू डिस्पेयर. सब कुछ खो गया है, सब कुछ खो जाएगा. दैट इज द थ्रेटनिंग इम्पल्स वी फील इन द पेशेंट, and the patient go into deep despair and feel like going to lose it. This is the state of cherry palm, which we find in many females, many mothers, कि मेरा बच्चा को कुछ हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, कंट्रोल का बाहर चले जा रहा है. That is known as the role of cherry palm. Next medicine which is there is aspirin, a vague and superstitious feeling. कभी कभार हमें होता है, अरे मेरे साथ तो ये होने वाला है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. Fear and worries of unknown origin, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिंदगी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है. मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मैं तो पानी में डूब जाऊंगा, मैं पानी में देखूंगा ना तो पानी में देखते देखते मैं पानी में डूब जाऊंगा, मैं फायर में जल जाऊंगा, मुझे जलन हो, मैं जल के मर जाऊंगा. दिस इज समथिंग विच इज, मेरे घर पे कुछ घूम रहा है, कोई घूम रहा है, वो मुझे खा जाएगा. These are something has nothing to do with the condition, but they are superstitious thing. आप ये काम करोगे ना आपकी मौत है, आप ये काम करोगे ना आपका जॉब चले जाएगा. Many people speak in this way, and that is what the medicine aspirin helps in. Fear and worries of unknown origin, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, उस चीज को लेके सोच के we get into the state. Next medicine, that is red chestnut. This is also another very good medicine that is we have in our batch flower group of medicine. Worried, over concern. कभी कभार होता है ना, अरे बच्चा को कुछ हो जाएगा, सुबह शाम मम्मी पापा दोनों, मम्मी नहीं, मम्मी को पापा के ऊपर भी भरोसा नहीं, नहीं मेरी भी बच्ची भी है, दोनों जा रहे छोड़ने स्कूल में, दोनों लेके आ रहे स्कूल से. दे आर ओवर कंसर्न, ओवर पैम्पर्ड. उसी के कारण क्या होती है, ओवर पैम्पर्ड, कि कुछ हो जाएगा बच्चे को, इसका पापा तो उतना देखभाल नहीं करता है, चलो मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा कि बच्चे सही से स्कूल में पहुंचा कि नहीं, सही से खाना खा रहा है कि नहीं. दोनों लोग बैठ के ताकते रहते, बच्चा खाना खा रहा है. सीधे इमेजिन द सिचुएशन, व्हाट हैपेंस. दैट इज द फियर ऑफ worriedness, over concernedness, which leads the person into the state of giving the remedy red chestnut. When we feel over concerned and worried for others, this is the medicine to be given. Next,
Now, next group of medicine which we are going to talk on is uncertainty or doubt. This uncertainty and doubt is a condition, again, a strong psychological condition. तुमने किया? नहीं नहीं, तुमने तो नहीं किया. तुमने क्यों कर दिया? That fellow has done. This is the basic reason why husband and wife झगड़ते हैं, जानते हो? तुमने किया तभी तो ये हुआ. नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते हो. This is a doubt, a situation of doubt. When doubt comes, then only we behave very erratically. So uncertainty and doubt में सबसे पहले जो medicine आ रही है, that is Serato. Serato is a medicine which has usually the person doesn't have sufficient confidence in themselves to make their own decision. Indecisive. अपना अच्छा स्कूल जाना है, बच्चे को छोड़ना है, नहीं नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता, मैं जाऊंगा तो कहीं और छोड़ के नहीं आऊंगा, कुछ बच्चे के साथ हो जाए. दिस इज द इनडिसिसिवनेस. पैसे बैंक में जमा करना है, छोटा बच्चे से बैंक में पैसा जमा कर रहा है, वो नहीं जमा कर, नहीं मैं रास्ते पे इसको खो दूं तो, मेरे पैसे गिर जाए तो. दिस इज इनडिसिसिवनेस, द स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस व्हिच कॉज द पेशेंट सो सीकिंग. इसीलिए ये इनडिसिसिव पर्सन क्या करता है जानते हो? पूछता है अच्छा उसको भेजू, उसके साथ भेज दूं, वो सही बंदा है, सही से कर लेगा. दिस इज द इनडिसिसिवनेस which a patient has with the state of Chakravaty. So when you do not trust your own judgment in decision making, there the role of Serato comes. Next medicine, Scleranthus. This is also a very good medicine for indecisiveness. They suffer much from being unable to decide between two things. दोनों चीज के बीच उनको, this is a very common thing you happen, you know, दोनों चीज के बीच, अच्छा रेड ले या ग्रीन ले, जस्ट फॉर कलर. रेड कलर करे सूट, तो जैसे हम कपड़ा खरीदने गए, हमने सूट डिसाइड कर लिया, हमने साड़ी डिसाइड कर लिया, हमने हमारी जो भी ऑर्नामेंट्स लेना है डिसाइड कर लिया, लेकिन अभी यस करे या नो करे, मींस राइट साइड में देखा है, नो साइड, कलर में रेड ले या येलो ले. इन सूट, whether to take a suit or a sari, whether to take a diamond ornament or a silver ornament or a gold ornament. This is the indecisiveness. Even in food, जब दो तीन तरह का फूड आया, अरे चावल भी खाए, रोटी भी खाए, सब्जी भी खाए, दाल भी खाए, क्या खाना चाहिए और क्या, उसमें वो टाइम निकाल देते. दिस इज द स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस, कि दोनों में से वो समझ ही नहीं पाते कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए. If this things happen, then think of the remedy Scleranthus. Indecisive, imbalance, uncertainty, which leads into dizziness. तभी दिमाग घूमने लगता है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या करे क्या नहीं करे. This type of conditions goes on one after another. When you suffer from indecision, particularly when faced with two choice, ये याद रखना, इसमें दो चॉइस रहेगा, तभी Scleranthus की रोल आएगी. You have to understand the drug very nicely. और ये चीज हमारी जिंदगी में हर फेज में कुछ ना कुछ चीज में, ज्यादा चीज खरीदते वक्त, बच्चे को कुछ देते वक्त, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉमनली इंडिकेटेड रेमेडी हो जाती है. नेक्स्ट मेडिसिन, वर्षा, इट इज ऑडिएबल? डॉक्टर वर्षा, इट इज ऑडिएबल? Yes, ma'am, it is completely audible, and even the PPTs are going well. You may continue. Thank you, ma'am. No, I have just stopped my video just for. Yes, ma'am, it is going very well. Yeah. Fine. Thank you. No issue. Next drug which is coming is Genesian. This is another very drug for the uncertainty and doubt. Here, those people who are easily discouraged. जैसे सिचुएशन है, तू ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है, मत कर. तो व्हाट ही विल डू, जाते जाते वो काम छोड़ के आ जाएगा. अरे उसने बोला ना नहीं करना है, इसीलिए क्या मतलब है, करके क्या मिलने वाला है. दिस इज इजीली डिस्करेज. दिस इज अनदर अफेयर विच स्टूडेंट्स as well as elderly person suffer. They are going for the school. स्कूल में जाते जाते किसी ने बोला स्कूल में जाके क्या करेगा, अभी तो कोविड चल रही है, मत जा. तो बच्चा घर लौट के आ जाएगा. इवन पेरेंट्स घर पहुंचाते पहुंचाते उनको घर पे लेके आ जाएगा. दिस इज द स्टेट
वेर इजीली डिस्करेज हो जाते हैं. सो व्हाट हैपेंस, दिस ऑल्सो कैन बी देयर इन केस ऑफ इलनेस. बीमारी ठीक हो रही है, कोई बोला अच्छा तू ठीक हो रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है तू ठीक हो रहा है, तू तो बहुत बीमार है. द सेम थिंग्स ही विल गो इनटू द नेगेटिव एस्पेक्ट. फील करेगा मैं तो ठीक हो ही नहीं रहा, मैं कहाँ ठीक हो रहा हूँ, वो तो डॉक्टर बोल रहे हैं, मैं तो वैसे के वैसा ही हूँ. दिस इज द स्टेट वेयर द जेनिशियन हैज अ वेरी गुड रोल. Discouraged, depressed, when you easily get discouraged when faced with difficulties. तो डिफिकल्टीज में ही हम डिस्करेजमेंट होते हैं. दिस इज वेरी राइट थिंग. जब हमको कोई जानबूझ के पेन डाउन करने की कोशिश करता है, आप अच्छे रिजल्ट कर रहे हो, लेकिन उस आपके कोई ऐसे बंदा है जो फ्रेंड ही है इन द फॉर्म ऑफ डिसगाइज, आपको बोल रहा है तू ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा करेगा तो ऐसे हो जाएगा. He was going in the right track. He is reading. जस्ट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते उन्होंने एक शेड्यूल बना लिया कि 2 घंटा मुझे पढ़ाई करनी है. उसकी जो फ्रेंड है उसने देखा अरे ये तो 2 घंटा पढ़ाई कर रहा है, मैं तो कर नहीं पाऊंगा. तो वो क्या बोलेगा, तू 2 घंटा क्यों पढ़ाई कर रहा है, टीवी क्यों नहीं देख रहा है, मोबाइल क्यों नहीं देख रहा है. देन दैट फेलो गेट डिस्करेज, ही गेट इन्फ्लुएंस. डिस्करेज हो गई तो बोला हाँ सही था, पढ़ाई करके क्या मिलने वाला है, आजकल तो देखो ना इंजीनियर भी ऐसे 5,000 10,000 की नौकरी कर रहे, हम करके क्या करेंगे. सो दिस इज द स्टेट ऑफ डिस्करेजमेंट एंड हियर द रोल ऑफ जेनिशियन इज वेरी वेरी इंडिकेटेड. नेक्स्ट मेडिसिन इज ग्रोज. GROSE, grows. Lack of certainty and hope to save oneself. उसको ऐसा लगता है मैं अभी और कुछ नहीं कर पाऊंगा. The patient becomes totally pessimistic. Hopelessness, despair, very great hopeless. They have given up, believe that more can be done for them. कुछ भी नहीं हो सकता है. एक वर्ड बहुत लोग बोलते हैं, मेरे साथ और कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी की यही फल मुझे मिलना था, इससे आगे और मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला. दैट इज द स्टेट ऑफ होपलेसनेस, despair and pessimism. So what happens when you have the feeling of extreme hopelessness and despair? जब आप फील करते हो कि मेरे साथ तो और कुछ होने वाला ही नहीं है, everything has gone out of my life, then we think of this remedy grows in our day-to-day practice. Then comes on being, lack of concentration to the task. This is another very characteristic remedy, on being, where you will find that you are doing some work. Fine, आप कोई काम कर रहे हो, मोटिवेशन से ही कर रहे हो काम, बट सडनली आपकी कंसंट्रेशन लॉस हो गई ऑन द टास्क, और क्या हो जाते हो, एकदम फैल जाते हो, बहक जाते हो. अरे मैं काम कर रहा था, कैसे कर रहा था, मेरा तो तब तो कंसंट्रेशन था, अभी तो कंसंट्रेशन कहाँ चली गई, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एग्जाम में, मैंने अभी बोला ना 2-3 घंटे की शेड्यूल बना लिया और कॉन्सेंट्रेट करके वो पढ़ भी रहा है, उसको अंडरस्टैंड भी कर रहा है, एवरीथिंग इज डूइंग इट, बट अचानक उसकी कॉन्सेंट्रेशन लॉस हो गई और वो बहक गया, वेरीनेस हो गया, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा. व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दैट विल बी द कंडीशन. सो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द टास्क विल लीड द पेशेंट इनटू दिस स्टेट. सो व्हाट विल हैपन, वेरीनेस मेंटली, और ज्यादा कहाँ होती है जानते हो, फिजिकली. मैं तो बिस्तर से ही उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरा कंसंट्रेशन कहाँ से लगेगा, मैं तो बिस्तर पे ही पड़ गया. फीलिंग एज इफ लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन लाइफ, लगता है उसकी जो वाइटल पावर है वो पूरी खत्म हो गई और बिस्तर ले लिया. लेथर्जिटिक, नो enthusiasm, not able to perform, doubting, these all will be present in the patient of on being. Next medicine of uncertainty is wild oat. This is another very good medicine where we find the uncertainty level, crossing road in life. Crossroad in life, you know what do you mean by crossroad? Crossroad means चलते चलते कभी कभार हम आगे पीछे होते हैं ना, that is a crossroad. If you become crossroad, what will happen? You will feel मैं तो फिर से पीछे चले गया, मेरी तो जिंदगी पीछे चली गई, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा. This is a crossroad. Those who have ambitions to do something of prominence in life, who wish to have much experience,
and to joy which is possible for them to take life to full. Their difficulties is too determined that occupy to follow, as though their ambitions are strong. They have no calling which appeal to them above all others. They may cause delay and dissatisfaction. That means उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की थी, उन्होंने अपना एक गोल बनाया था, बट अचानक क्या हुआ, मोटिवेशन चेंज हो गई, मोटिवेशन चेंज हो गई, इनसेंसिटिव हो गए और अभी करंट एक्टिविटी करना छोड़ दिया। अच्छे से कर रहे थे, करते करते पूरा यू टर्न हो गया, यू टर्न होके जो करंट एक्टिविटी कर रहे थे, अरे क्या करने का, व्हाई आई एम डूइंग इट, व्हाट विल इट यील्ड टू मी। This condition comes in the case of wild oat patient. Before I change to another slide, in Genesian, one word I would like to tell, area of action and doing becomes different. जो एक्शन करना है और डूइंग करना है वो टोटली चेंज हो जाता है। एक्शन तो वो सोचेगा लेकिन डूइंग में वो जाके बहक जाएगा। दैट इज द स्टेट वेयर आई सम अप विद द अनसर्टेनिटी एंड डाउट ऑफ द मेडिसिन्स ऑफ Curato, Scleranthus, Genesian, Bruce, Hornbeam, and wild oat. Next slide. Dr. Varsha, will be within time or I'm taking more time? No problem, ma'am. You continue. Okay, fine. Next slide. Next slide is insufficient interest in present circumstances. The things are okay. I'm speaking in English and Hindi both. Yes, ma'am. It is well going on. Okay, fine. Thank you. So insufficient interest in present circumstances. This is another very, very characteristic condition. जहां पे देखा जाता है ये बच्चे में बहुत ज्यादा मिलती है और the person who is doing some very intelligent intellectual work, कभी कभार उनमें ये होता है कि करते करते उनके दिमाग पूरा उल्टा दिशा में चले जाते हैं। Insufficient interest in present circumstances. अभी जो कर रहा है वो भूल के पास्ट और फ्यूचर में वो डील करता है। He just feels that what he is doing is not to be done now. He will be going for daydreaming, withdrawing, lack of concentration. तो क्या हो जाती है जो उसको करना चाहिए? Next slide, please. Next slide, please. Yes, loss of present happiness, wandering and longing of failure. उसको क्या है जो अभी मिलना चाहिए, जो अभी करना चाहिए, वो भूल के वो चुपचाप हो जाता है। उसके अंदर में जो हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस का लॉस हो जाती है और वो फ्यूचर के लिए सोचता है या पास्ट का सोचता है, प्रेजेंट को भूल जाता है। सो दोज हु आर ड्रीमी, ड्राउजी, नॉट फुल्ली अवेक, not great interest in life, quiet people, not really happy in their present circumstances, living more in future. पीछे का ही देखता है, आगे का देखता है, rather than in the present. So what they do daydreaming. मेरे पास 10 लाख की कार, मेरे पास 1 करोड़ की बंगला, ये सब होना चाहिए. And he will be going on doing that. So what will happen? प्रेजेंट सिचुएशन में जो उसको काम करके एक स्टेबिलिटी में आना चाहिए वो चीज वो भूल जाएगा. तो व्हाट विल हैपन? ही विल गो इनटू डिप्रेशन ऑब्वियसली, क्योंकि उसका जो सपना है, सपना तो तभी क्रिएट कर पाएगा जब वो प्रेजेंटली उसको कंप्लीट करेगा. जब वो चीज को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा तो व्हाट विल हैपन? ही विल गो हैव लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लैक ऑफ, द पर्सन विल गो इनटू टोटली स्टेट ऑफ daydreaming, a total state of depression. Next. Next drug is honeysuckle. Honeysuckle is basically nostalgic feeling of memories of happiness experienced in the past. This is again ऐसी घटना जो पहले हो चुकी है, उस टाइम पे उसने कुछ अचीव किया है, उस चीज को लेके वो सोचते रहते. That is the nostalgic feeling of memories of happiness experienced in the past. उसी में वो dwell करता है. अरे मैंने पहले बहुत अच्छा पोजीशन में था, मैं प्रिंसिपल की पोजीशन में था, मेरे पास इतने पावर थे,
मैं सब ये सब करता था, अभी जो है उसमें से भूल गया, अभी क्या है उसमें नहीं करना है. तो इफ he is not going to do the present job, what will happen? He will lose his job. He is dwelling on the past episodes of life, कि मैं ऐसा था, ऐसा करता था, ये मेरा लाइफ था, अभी मेरा साइड. So what will happen? Now, this is one which I'm talking about the good. It can be past bad memories also. अभी कंडीशन बहुत अच्छा है, बट पास्ट में उसके साथ एक्सीडेंट हुआ होगा, और एक्सीडेंट को वो 2 साल तक घर पे बैठा था, उसका रोजी रोजगार खत्म हो गया था, बट नाउ ही इज डूइंग गुड, नाउ ही इज हेल्दी. तो व्हाट विल हैपन? तो अभी की सिचुएशन में ही इज लूजिंग द प्रेजेंट कंडीशन. सो ओवर अटैच टू द पास्ट मेमोरीज, good or bad, can't let them go to the past, and so the patient becomes homesick. तो घर पे बैठ जाता. मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं क्या करता, उस टाइम पे मेरे साथ क्या क्या हुआ. तो ही इज ब्रूडिंग ऑन द पास्ट. इफ अ पर्सन इज ब्रूडिंग ऑन द पास्ट, थिंक ऑफ हनी सक्कर. नेक्स्ट, वाइल्ड रोज. Wild rose is another very medicine who is having a condition of present hardship, unhappiness feeling, powerlessness to arise, lack of interest in the present, lack of involvement and apathy. So what happens? क्या होती है? The patient here, those who are without apparently sufficient reason, become resigned to all that happens. Means वो जॉब भी छोड़ सकता है, वो अपना काम भी छोड़ सकता है, and just glide through the life, taking it as it is. उसको मेहनत करनी नहीं है, जिंदगी में कुछ अचीव करनी नहीं है. ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो ना. Many people you will find, चलो चलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, let us go. There's no ambition, no idealism in the life, moving on in the life how it is moving. जैसे चल दिनचर्या जैसे चल रही है वैसे ही चलाने की कोशिश में वो चलते रहते हैं. दैट मीन्स, और उसमें डेवलप क्या हो जाता है? एपैथेटिक, सिंपैथी रहती नहीं. ठीक है, चल रहा है चलने दो ना, जैसा चल रहा है उतने में चलने दो. रेजिग्नेशन फ्रॉम गेटिंग एनीथिंग, कुछ भी नया चीज उसको लेना नहीं है, उसको रिजाइन करके बैठ गया, नया जॉब रिजाइन करके बैठ गया. लॉस ऑफ मोटिवेशन, टोटल मोटिवेशन को लेके बैठ गया, लॉस करके बैठ गया. लैक ऑफ एम्बिशन, देयर इज नो एम्बिशन इन द लाइफ, ओनली बैठे बैठे खाना, घर पे खाना. क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसने अपनी जो रीजनिंग है वो रीजनिंग को पूरी उसने ग्लाइड कर दिया. ही हैज ग्लाइडेड द रीजनिंग एंड इज मूविंग विद व्हाट इज दिनचर्या में अभी जो चल रहा है उसी को उसने एक्सेप्ट कर लिया. हैविंग नो एम्बिशन, no motivations, no idealism in life. So here the role of wild rose. I think wild rose becomes very very erratic for a person. if घर पे ऐसे कोई wild rose person रहता है तो घर के परिवार वाले के लिए बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि ना वो बंदा घर का रहता है ना वो बाहर का रहता है, ना वो जाना चाहता है, जो चल रहा है उसी को एक्सेप्ट करके खुश हो जाता है. So there is no moving of life for this person. He's stuck in one floor. Next comes white chestnut. This is another very important remedy for our in the batch flower. Repeated unwanted thoughts. Repeated unwanted thoughts. I spectrum. Brooding of thoughts. Unwanted brooding of thoughts. किसी ने आपको कुछ बोल दिया और उसको लेके इतना आप सोच रहे हो, सोचते सोचते आपकी पूरी एंडोक्राइन को आपने हटा दिया, एंडोक्राइन आपकी डिसबैलेंस हो गई, एंड यू डेवलप द सिम्टम्स ऑफ थायराइड, आइदर हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म. क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है और उसको तो अभी का जीना ही नहीं है, इसीलिए वो थॉट प्रोसेस में जीता है. आप कभी भी नेट्रम को देखोगे तो नेट्रम पेशेंट आप उसके आंखों में देखोगे तो वो इस दुनिया में नहीं है, वो अगली कोई दुनिया में चल रहा है. He will be in a illusion, delusion and hallucination with a brooding in his life. Continuous वो brood करते जाएगा and the patient will repeated unwanted thoughts, mental arguments, concentration loss, sleeplessness and insomnia. This is the basic reason. बहुत सारे पेशेंट आके बोलते नींद नहीं आती डॉक्टर साहब,
क्या करते हो रात भर, नींद नहीं आती तो सोचते रहते हैं। क्या सोचते रहते हो, पता नहीं क्या सोच आती है, आती ही जाती है सोच, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, बंद ही नहीं होता है. इट्स वेरी कॉमन. आई थिंक डॉक्टर वर्षा, you can also understand that it is more similar to our natrum group of medicines. Natrum mur, natrum phos, natrum sul, these falls under the group of medicines, where white chestnut is a very helpful medicine for treating the patient. Next slide. Done, ma'am. Yes, pardon? Yes, already changed the slide. You continue. Yeah, yes. Next drug is mustard. Mind overshadowed by depression and gloom, impossible to find joy in present success. इतने सारा पुराना चीज उसको ओवरकम उसकी दिमाग में आ गई है, एज बिकॉज द वाइट चेस्टनट जिसका मैं बोल रही थी, ग्लूमिंग हो रहा है. ग्लूमिंग होते होते ऐसे फॉर्म में आ गया कि अभी वो अच्छा खासा घर बार बच्चे हस्बैंड सब कमाने वाला सब कुछ ले, पुराना कभी 20 साल पुराना उसके साथ कोई घटना हुआ था, वो घटना को लेके बैठ गए, ऐसे मेरे साथ हुआ था, बट प्रेजेंट स्टेट को वो टोटली डिप्रेशन कंडीशन में ले गया, एंड ही इज लीडिंग इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ, हैविंग डिप्रेशन, डीप ब्लूम फॉर नो रीजन, और कारण कुछ भी नहीं है. प्रेजेंटली दे आर हैविंग अ वेरी एक्सेलेंट लाइफ, अ वेरी फ्लरिशिंग लाइफ, बट स्टिल आप उनके हस्बैंड आके बोलेंगे, द पेशेंट कम्स, द फीमेल इज देयर, हस्बैंड आके बोलेंगे देखिए डॉक्टर साहब सब कुछ है, मैंने उसके लिए सब कुछ करा है, लेकिन फिर भी देखो ना वो पुराना चीज को भूलती ही नहीं है, उसी को कब उसके साथ क्या हुआ था उसी को चीज को पकड़ के अभी भी बैठी हुई है, एंड दैट इज द वे शी इज लीडिंग हर लाइफ. दिस इज मस्टर्ड. नेक्स्ट कम्स द चेस्ट नट bud. This is another very good medicine. Repeated mistakes again and again. For those who do not want to take advantage of observation and experience. ये पेशेंट क्या करता है, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट नीड्स टू रिपीट एक्सपीरियंस. बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मम्मी बोलती है ना, क्योंकि मम्मी घर की है, बेटा आप ना ऐसे ना करो, ऐसे चप्पल पहन के ना जाओ, आप सही से पढ़ाई कर लो, टाइम पे डेली 1 घंटा करके पढ़ाई कर लो. तो बच्चा क्या सोचता है, नहीं 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 मम्मी बोल रही है, मीन्स इट इज वेरी बैड. फिर क्या होगा, वो बच्चा फेल हो जाएगा. एक बार तो फेल हो गया, चलो नहीं इस बार मम्मी फिर से बोली, बेटा पिछले बार तो फेल हुए, इस बार तो पास हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो. ही इज नॉट टेकिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द मदर और द टीचर और द एल्डरली. बहुत जगह पे घर पे एल्डरली पर्सन रहते हैं, बेटा आप ना ऐसा मत करो, ऐसे करोगे ना आपके साथ तकलीफ हो जाएगी, आप ऐसे करके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल फॉर मनी, आप इस तरीके से पैसे को बहाओ नहीं, पैसे बहाओगे तो आपके पास पैसे कम हो जाएंगे, बाद में आपको बहुत तकलीफें होगी. वो पर्सन जिसको वो बोला जा रहा है, व्हाट ही डज, अरे वो तो बकवास है, वो तो बुड्ढी है, उसको क्या पता है जिंदगी जीने की तरीका, हम तो जिंदगी के ऐश करके जिएंगे. और क्या होता है, बार बार फिर जाके उधारी लेता है, फिर वो उधारी का पैसे निपटाने के लिए फिर 2-3 जगह पे काम करता है. सो दिस गोज ऑन अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज द सिम्टम्स ऑफ chestnut blood, which is very common nowadays. अभी ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा हमको डे टू डे लाइफ में मिलती है कि लोग अपने जिंदगी को अपने हिसाब से ना चला के दे मूव आउट ऑफ कंट्रोल, और फिर जब जाते हैं तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाता. So keeps repeating the same mistake and doesn't learn from the past experience. This is the stage of chestnut bud. Next is olive. Mind and body both exhausted to attend with full capacity of the task at hand. इतना ज्यादा exhausted physically and mentally कि वो कोई काम कर ही नहीं पाता. Lack of energy, fatigue will happen to the patient. So what happens? Exhausted हो जाता है, रिजर्व कोई एनर्जी रहती नहीं है, स्ट्रेंथ रहती नहीं है, वो चुपचाप फिजिकली एंड मेंटली बैठ जाता है. सो किसको दिया जाता है, those who have suffered from mentally or physically and are so exhausted and weary that they feel they have no more strength to make any effort. उनकी शरीर में कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा, उठ ही नहीं पाएगा, बिस्तर ले लिया तो दैट इज द लास्ट थिंग ही हैज अटेंडेड, और इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता. Lack of energy and fatigue,
exhausted feeling, no reserve strength. Here comes the role. And we find this in young age boys nowadays. Very commonly, हमें ये चीज बहुत मिलती है. बच्चा बिस्तर पे सो रहा है, क्या हुआ बेटा, मम्मी पूछ रही है, मम्मी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा फटीग हो रही है, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, जॉब में नहीं जाना है. That means total negative effect of your life you're creating. If you find this type of patients, please use the remedy always. Next. Next group is loneliness. This loneliness is has means सब कोई होते हुए भी lonely. आपके घर पे हर कोई है, but still you feel lonely. नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं है. You feel very much ill health. जो पर्सन स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ कोविड, जब अपने परिवार उनके साथ नहीं था, परिवार को दूर रख के उनको महीने महीने हॉस्पिटलाइज किया गया था टू कम आउट फ्रॉम द स्टेट ऑफ हेल्थ. तो उस स्टेट में फॉर दोज हु इज हेल्थ और इलनेस लाइक टू बी अलोन, very quiet people who move about without any noise. They are aloof, leave people alone and go to their own way. वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं करते, चुपचाप पड़े रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं. जैसे कोविड का पेशेंट ठीक होके आया, फिर किसी से बातचीत नहीं. पहले कितना उधम करता था, बातचीत करता था, सबसे घूमता फिरता था. अभी चुपचाप अपने रूम पे पड़ा रहता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, कुछ किसी से बात नहीं करना. This is a state of loneliness. When you start feeling yourself aloof, lonely, antisocial हो जाते हो. A loneliness means आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, means you are becoming antisocial. Obviously that is there. Here comes the role of medicine, water boiling. Next, impatience. Impatience means what is the word itself is telling you, having no patience. Those who are quick in thought and action and who wish all things to be done without hesitation or delay. Immediately कर लेना है, अभी कर लेना है, अभी खत्म कर देना है, without thinking. अच्छा ये आया है, इसको अभी खा लो, ये करना है, पैसा आया है, इसको exhaust कर दो. This is the way, impatience. So impatient patients are usually very nervous, irritated. So उसके कारण क्या होती है impatience में? Suddenly you have taken your car and you are riding in a speed of 100 kilometers, जहां पे आप देख भी नहीं रहे हो आजू बाजू में कौन है, आजू बाजू में कौन है, तो आप क्या करोगे, जाके एक्सीडेंट ही करोगे ना. प्रोन टू एक्सीडेंट, फिजिडिटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस. तो इम्पेशेंस पेशेंट ये तो हमको बहुत मिलता है दुनिया में, हर साइड, घर पे से लेके बाहर में जब भी हम चलते हैं. एंड पेशेंट्स में तो हमें डॉक्टर साहब हम ठीक हो जाएंगे ना, अब भी दे विल टेक द रिटन, हमसे जैसे करार बनाते हैं ना कि हाँ आप लिख के दे दो कि 3 महीने में ठीक हो जाऊंगा. तो ये पेशेंट आके बोलेगा 6 साल की बीमारी, डॉक्टर साहब अब भी मुझे ठीक होना है, आज मुझे ठीक होना है, अब भी ठीक कर दो. दिस इज द स्टेट ऑफ इम्पेशेंस. This you have to understand from the patient. Next is Heather, self-centered, self-concerned about themselves. ये patient is very selfish. Heather patients are very selfish. वो किसी का नहीं सोचेगा, अपना छोड़, अपना attention, अपना जिंदगी, अपनी टॉकेटिवनेस, अपने को शो करना कि मैं सब कुछ हूँ. वो किसी का कुछ नहीं जानता है. He is only concerned about himself और उसी से ही वो preoccupied रहता है. एलिमेंट्स भी वो अपने लिए बनाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी वो अपने लिए बनाता है, क्योंकि किसी से ना हेल्प देता है, ना हेल्प लेता है, ना करता है, किसी से बात भी नहीं करेगा, सिर्फ वो बोले सोचेगा आई एम डूइंग व्हाट इज व्हाट. एंड इफ अ हेडर्ड पेशेंट इज देयर एनीवेयर, वो इतना बात करेगा कि आप किसी की बात सुनेगा ही नहीं. दैट इज टॉकेटिवनेस, डिमांड्स अटेंशन, dislikes being alone and lonely. This is the state of Heather. Next. Varsha, it is moving on okay? Yes, ma'am. It is going nice. And explanation is okay, na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You continue. Okay.
No, you told me to speak in two languages. No, that's the reason. I'm Yeah, trying to ma'am. explain it. Actually, the reason is Yeah, behind. Some are out of Gujarat as well, and some of the yeah, peoples yeah. are non-homeopath as well. So I just No, asked no, you to it's be okay now bilingual. Yes, because ma'am. our purpose was to make this system known to people. So Yes, that's the yes, reason I'm trying to make it easily palatable so yes, that ma'am. Hello. my time using. Yes, ma'am. Yes. Yes. Next Continue, ma'am. is agrimony. Agrimony is a drug which can remove addiction, unhappy, anxiety, and insomnia. For those who love peace and are distressing by argument or quarrel, जानबूझ के झगड़ा करेंगे. Sensitive to discord or environment, internal restlessness, worries, effort to find peace within himself. So what happens? वो झगड़ा करेगा, नहीं ये चाहिए, यही करना है, ऐसे ही करना है, नहीं करोगे तो मैं नहीं करने दूंगा. सो उसके कारण उसको एंजाइटी होती है, उसके कारण उसको इंसोम्निया हो जाती है. शी स्टार्ट्स फीलिंग कि मुझे तो नींद आ नहीं रही. क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसकी एंजाइटी है. एंजाइटी के कारण क्या है? अनहैप्पीनेस. क्योंकि वो क्वारल कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, सबके साथ डिमांड कर रहा है. तो व्हाट विल हैपन? अ सिचुएशन ऑफ unhealthiness will prepare in the area where they stay. So this is the medicine where agrimony is the best of choice. Next, sensory, oversensitive from being too open and receptive to the expectation and demand of others. बहुत ज़्यादा sensitive. Patient कैसा रहेगा? Kind, quiet, gentle people who are over anxious to serve others. बहुत ज्यादा वो लोगों को सर्व, इसीलिए तो ओवर सेंसिटिव है. अच्छा कोई मेहमान आया, नहीं उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हर चीज परफेक्ट होना चाहिए. वो मेरे घर पे आया, कुछ अच्छा करके जाए. तो व्हाट विल हैपन? इसके कारण क्या हो जाएगी? लोग उसको बुली करेंगे. ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में भी होता है ना, लोग बुली करते हैं, उसको पागल बनाते हैं, उसको उल्टा पल्टा बात बोलते हैं, ज्यादा काम करवाते हैं. और उसके कारण क्या होती है? लैक ऑफ एनर्जी हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, चुपचाप हो जाता है, क्वाइट हो जाती है. दिस हैपेंस क्योंकि व्हाट हैपेंस इज इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट ओवर होने के कारण आप ज्यादा करोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, और उस फायदा के कारण आप क्या करोगे? लैक ऑफ एनर्जी में चले जाओगे, टायर्डनेस में चले जाओगे, चुपचाप हो जाओगे, क्वाइट हो जाओगे, पैसिव स्टेट you will take in your life. This is what is the medicine is sensual. Next is holy, hatred, jealousy, envy, and suspicion. This is very strong medicine. One of the best medicine where you can give lot of cure to the patient. Where holy is one of the medicine. Hatred, jealous. We have many drugs in homeopathy. Group of also snakes. Snakes suspicious. Lackesis, best remedy of choice. इस तरह का छोटी छोटी चीज में वो अपना, अच्छा तूने ये कैसा कर लिया, कैसा कर लिया, तो जाके कैसे करके उसकी सामान लेके आ गया, जेलस हो गया. अच्छा तूने 1 करोड़ का बंगला लिया, चलो मैं उसको ऐसे फंसा दूंगा कि वो उसका ईएमआई जो है पटा नहीं पाए. इनसिक्योरिटी, उसको, this is insecurity is also present in नक्सभूमिका. Remember, नक्सभूमिका में अपनी पोजीशन खोने की डर में वो इनसिक्योरिटी होता है. That is the reason also नक्सभूमिका is jealous and having the condition कि मेरा पोजीशन कोई ना ले. Suspicious, aggressive, needs compassion. This is the where the holy medicine has very much scope in the treatment of a mental disorder. Next. Despondency is despair. This is one of the very, very common condition which people come with. Hello. Ma'am, your voice is not coming now. Can you hear me? Now I can hear. Yeah.
lack of confidence, expectation of failure, and despondency. This is the most important. Lack of confidence. मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा. Depressed, discouraged, feeling of inferiority. Many people being in a high post have an inferiority complex. वो मुझसे अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. वो अच्छा काम कर लेगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. Specifically in higher post of any institute, I've seen many people suffering with the state of despair and despondence. There, the role of LARC has lot to do, and we have been treating lot of patients with LARC. When you need self confidence, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की लॉस हो, वो बच्चे में भी होती है, बड़े में भी नहीं होती है, बुजुर्ग में भी होती है. मैंने देखा है कि पीपल सफर विद द स्टेट ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. फाइन. सेल्फ ब्लेम, दिस इज अनदर मेडिसिन. मैंने कुछ गलत किया ना, इसीलिए मेरे साथ हुआ. अपने को हर टाइम बार बार सेल्फ ब्लेम करना. रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्कोप ऑफ वर्क, गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड रेस्पॉन्डेंट. क्या होती है? गिल्ट फीलिंग, मैंने जरूर कुछ गलत किया है. सेल्फ फ्री अप्रोच, ज्यादा शेमफुलनेस, अनडिजर्विंग कंडीशंस, दीज ऑल लीड इनटू द स्टेट ऑफ फाइन. बहुत पेशेंट में मैंने ये देखा है कि अपने को गिल्ट, कुछ नहीं किया उसने गिल्टी, नहीं 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 मैंने कुछ गलती किया है ना, तभी तो मेरे साथ ये हुआ होगा, उसने तो सही करता है. दिस इज द स्टेट ऑफ फाइन. वेरी कॉमनली वी फाइंड इन पर्सन ऑफ अ फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली में मैंने ये चीज बहुत देखा है. और इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में भी देखा. और एल्डरली, दोज हु आर वेरी ओल्ड पीपल, वो भी हाथ जोड़ते रहता है, मैंने कुछ गलत किया होगा, आप मुझे ऐसा मत बोलो. बिकॉज उनकी इनसिक्योरिटी कहाँ है, तो उनको घर से कोई ना निकाल दे, इसीलिए वो इस तरह की. बट बिफोर ही वॉज अ वेरी डोमिनेंट पर्सन, ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, उन्होंने सब कुछ लीड किया था, एंड दैट वाज द रीजन. नेक्स्ट इज एलन. ओवरवेल्म्ड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्कोप ऑफ वर्क गेट्स एग्जॉस्टेड एंड डिस्पॉन्डेंट. क्या होती है? बहुत एक काम आया, उसमें कूद कूद के काम करने लगे, करते करते फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए. फिर क्या हुआ? एग्जॉस्टेड के कारण फिर डिप्रेशन फील कर, डिस्पॉन्डेंसी फील करता है. अरे यार इतना थक गया, मैं कैसे काम करूं, बहुत काम आ गया, जरूरत नहीं थी उसका करने की, बट दे गॉट इनटू द स्टेट. नेक्स्ट ड्रग. Star of Bethlehem, which I was talking about, an excellent remedy. I would not call it only an excellent remedy. It is one of the gifts by Dr. Batch to our community for treating patients. Because here, after effect of shock, either mental or physical, एक्सीडेंट हो गया है उसके बाद दे दो, किसी की डेथ हो गई उसके बाद दे दो, चोरी हो गई उसके बाद दे दो, कहीं अर्थक्वेक हो गई, पूरी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गई उसके बाद दे दो. देखो तो एक बार देखो, I have given more than 2000 to 3000 people this medicine. जो पेशेंट्स में इस तरह की कंडीशन, शॉक डेवलप हो जाती है, एक्यूट शॉक और क्रॉनिक, इन बोथ. यू माइट बी नोइंग, एक्यूट में हम आर्निका को यूज करते हैं, क्रॉनिक में भी हम आर्निका को यूज करते हैं. बोथ द रेमेडीज आर यूज्ड इन शॉक एंड आई हैव बीन यूजिंग इट मेनी टाइम्स. मैंने ये दवाई बहुत बार यूज की है मेरी डे टू डे लाइफ में, एंड इट इज एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर आवर ट्रीटमेंट. Next is below. Resentment and bitterness. क्या होती है? Those who are doing good job are following the calling of the life and who hope to do something important, and then often for the benefit of humanity. तो कभी कभार क्या है, जैसे सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्क में जब करने जाते हैं ना सोसाइटी के साथ, बहुत लोग गाली भी देते हैं, मार भी पड़ती है, बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, पुलिस को भी पकड़ा दिया जाता है कि वो अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण कर रहे हैं. उसके कारण क्या होती है? बिटरनेस डेवलप होती है हम अपने अंदर कि मैं कुछ अच्छा कर रहा था और लोगों ने मेरे साथ ऐसे कर दिया. दिस इज द स्टेट वेयर बिलो इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस. डिप्रेशन में चले जाता है, ओवरवेल्म बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जॉस्टेड हो जाता है. देयर वी थिंक ऑफ द नेक्स्ट.
Oak is another very good remedy. Exhausted, overworked, workaholic. Workaholic means Ma'am, your voice is exhausted. breaking. Now? Yes, now it's clear. Now it's okay. Exhaustion, overwork, workaholic, fatigue, overachiever. Varsha, sorry, there might be some network issues today. Yes, ma'am, I can understand, but right now it is breaking. Till now it was wonderful. Okay. But from Oak, I think from the Oak, the things are going not well. So can you repeat from? Now Yes. Is it audible? No, it is breaking. It's breaking. Oh, okay. So the state of exhaustion, overwork, workaholic, fatigue, and overachievers, these are the main key points of Oak. It is going well. Go to the next drug. Okay, thank you. Yes. Crab apple. Self-dislike, self-disgust and despair. अपने को ही वो डाउन कर देते हैं. Crab apple is a person. मैं ही गंदा हूँ, मैं ही खराब हूँ, मैं ही जिंदगी में सबसे ज्यादा मेरी इमेज खराब है, मैं कोई काम सही से नहीं कर पाता हूँ. बहुत लोग सेल्फ इमेज को इस तरीके से डाउन करते हैं. This is the symptoms of crab apple. You'll find it in many people in your life. Not accepting own self-image. This is crab apple. Next. Next is overcare for the welfare of others. This is another group of medicine which is very, very, I think this might be the last group of our batch flower group of 7 group of medicine. Yes, ma'am, this is the last group. Yeah, overcare for the welfare of others. Chori is a medicine which is very good for possessiveness, overprotective, self-centered, critical, nagging, self-pity, easily offended, manipulating, and demanding. What is the basic nature? Those who have the nature of possessiveness, ये मेरा ही चीज है. ओवर प्रोटेक्टिव, मेरे सामान है तो मुझे ही रखना है. मेरे में आई में जो घूमता है ना, सबसे ज्यादा जो पेशेंट आई में घूमता है, मेरा मेरा सब कुछ, घर भी मेरा, बच्चा भी मेरा, सब कोई मेरा, जो इसमें घूमता है उसमें यू थिंक ऑफ द मेडिसिन दैट इज द कैन बी ओके. सो पॉजिटिवनेस, सेल्फ लव, सेल्फ पिटी, attention, desires for attention and company. Next, Verbian. Next drug is Verbian. Those who with fixed principles, with ideas, which have confidence, are right, and over enthusiastic, hyperactive, highly strung. जिनको कुछ करना है, अचीव करना है, इससे पहले हमने देखा कुछ है जो कुछ करना ही नहीं है, सब छोड़ के रख दिया. इनको क्या है? हाईली एंथुसियास्टिक, हाइपर एक्टिव. हाइपर एक्टिव बेबी में भी हम वर्बियन बहुत यूज करते हैं, where the physical energy is more than the mental energy. Remember, hyperactive babies have more physical energy than the mental energy. इसीलिए hyperactive baby को कोई भी काम दो, बैठा के काम दो, नहीं करेगा. उसको घूमने फिरने की, दौड़ने की काम दो, बहुत अच्छे से कर देगा, क्योंकि उसकी energy has to be removed. Many of the times I advise for hyperactive child for going to skating. स्केटिंग करेगा, उसकी पूरी की पूरी पसीना पसीना निकल जाए, देन वो बच्चे से आप पढ़ाई करवाओ, यू विल बी एबल टू. आई हैव अ पेशेंट ऑफ कुवैत, एक छोटा सा लड़का, उसकी हाइपर एक्टिव चाइल्ड थी. वो लड़का अभी पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में जा रहा है, एंड नाउ इज परफॉर्मिंग वेरी वेल. ओनली वन थेरेपी विच हैड गिवन अलोंग विथ माय ड्रग्स इज स्केटिंग. ये दोनों चीज को कंबाइन करके मैंने दिया दवाई, and now the boy is just improving anything. The mother is also so happy and the father is also so happy in life. This is what we can do with our medicines. Next, wine. Determination and ambitious. करना ही है, करके ही छोड़ना है. यहाँ पे ठीक है, determination and ambitious is a good thing, but ज्यादा हो जाता है ना, जहाँ पे flexibility पूरा खत्म हो जाती है. नहीं, करना ही है, 5 घंटा नहीं, 10 घंटा पढ़ना ही है, उठना ही नहीं है. I had seen one of my students, I remember a long time back.
उसको एग्जाम देना है एनाटॉमी का, वो हॉस्टल में बेड में बैठी, उसने वो बेड में खड्डा बना दिया, इतना डिटर्मिनेशन, and she scored also first rank in the college, in the university. This is the determination I've seen. But what happened? She suffered with constipation and other problems, physical problems. So this is determination. अच्छी चीज होती है, ambition भी अच्छी चीज होती है, लेकिन उसके साथ physical activity भी तो जरूरत है. This is the year where wine is a very good medicine. Next comes beach. This is another very good medicine of choice. Intolerance, want order and discipline everywhere. हर चीज, dictatorship, हिटलर का डिक्टेटरशिप फॉल्स अंडर दिस रेमेडी. हर चीज परफेक्टली होना चाहिए. लैक ऑफ कंपैशन, वो ये भी नहीं करेगा, तुमने ये किया, तुमको तो ये, यू विल गेट दिस इंजुरी, यू विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ वर्क. आपने गलत किया तो आपको ओवरवर्क करना ही पड़ेगा, आपको ओवरस्टे करके वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा. ही इज अ डिक्टेटर, ही इज द विच बिफोर मेडिसिन. So, next slide. I think I have completed all the. Ma'am, last one, rock water is remaining. Yeah. Yeah. So one drug is remaining. Okay. Yes, ma'am. Rock water, yes. It is inflexible and adamant. Again, यही चीज है. The same चीज what जो हमको अभी इसमें मिला है, बीच में भी मिला है, वो intolerance, critical lack of compassion. यहाँ पे क्या है? Self repression, self denial, self perfection, overwork, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, सब अपने ऊपर ले लेते हैं. मुझे, मैं प्रिंसिपल हूं ना, मैंने देखा है ऐसे प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल हूं ना, मेरे ऊपर ही तो आएगा, मुझे ही तो करना है, कोई तो करेगा नहीं. Nobody will do it. I only have to do because I have got the part to be solved and that is to be completed. So self-denial, self-perfection, overwork, self-sacrificing is the basic nature of rock water. Next slide. Next slide. Yes, ma'am. Can you see the slide? Rescue remedy? Ma'am? Ma'am? Ma'am, are you there? These are the 5 remedies combination which comes up with a very excellent remedy of our BACH FLOWER remedy, that is. Ma'am, your voice. Ma'am, can't hear you. 150 patients in IPD of the modern science, where everywhere to each and every patient I had given this remedy, and I could find out it could bring out the panic state of the patients back. From the 150 patient, 50 patient had gone home, and other 100 patients, their panic state went down. They started responding to the drug, which was being given at that time because there was a protocol by the WHO, but many of the patients were not responding because of the panic. I will die, something will happen, this has happened. Whatever I have already explained in the group of remedies, Ma'am, your voice is not coming right now. Ma'am, can you hear me? Yes, I can. Yes, okay. Can you hear me? Yes, can you hear me? Yes, now we can hear you. Yeah, because this remedy should be kept in every house. It can prevent any type of heart attack, sudden collapse, bleeding, sudden injury, any sort of condition can be compensated with this drug. Is an excellent remedy. What is known as any stressful situation, last minute exam or interview nervousness,
afterward of accident or bad news, this medicine relaxes and focuses and gets the patient calmed down. This is the best remedy I've ever used in the whole practice of last 16 years of my BACH FLOWER remedies. So as the name suggests, it is actually a rescue for many of the clients. Literally, Dr. Varsha, I'm talking about, it is literally just one drop can save one's life. Excellent, ma'am. It is really an excellent. I really have regard for Dr. Batch for giving us this remedy, and we are able to use this to our persons who are suffering with the conditions of suddenness, sudden collapse, sudden grief, sudden loss of someone, and that can be compensated with it. Next. I think it is the last slide. Yes, ma'am. So here comes the role of BACH FLOWER in children. I was talking about that there are many many people who need BACH FLOWERs. In the first slides, I have told a pregnant woman, a children, an old age person, a person who's in a panic. So this slide, last slide, why I prepared, because people, whatever type of different phases of mental conditions I have discussed, the 7 states, among them, children are the most persons who are suffering with it. BACH FLOWER remedies is a natural stress and emotional relief, safe for children, everyday fears, daydreaming, self-esteem, worries, sadness, and self-acceptance. These all are, and school issues. घर स्कूल में तो छोटी छोटी इशू लेके घर पे आएगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, fear, phobia, not able to tolerate somebody's importance. They all come under this group of medicines. Children respond quickly to remedies because they have unresolved emotional imbalance. Parents give the BACH FLOWERs to their children, are often amazed to see the positive effect of the remedy. यही सबसे कैरेक्टरिस्टिक है. बहुत सारे पेरेंट्स दवाई देने के बाद बोलते हैं डॉक्टर साहब एकदम बच्चा रिवॉर्ड बैक हो गया, पहले जैसा बन गया. यस, एक तो बच्चे में क्या है, क्रूकेटनेस कम है. दे आर वेरी क्लीन in comparison to the elderly because they have come across with different situations. But a child is very, very noble. A child is very, very clear. The child is very, very holy. I'll tell to a child. बच्चे में जो मासूमियत है वो बड़े में नहीं हो सकता है क्योंकि बड़े बहुत सारे फेजेस में से निकल के आए. तो बच्चे को जब हम ये दवाई देते हैं इमीडिएटली वो इफेक्ट करता है. इमीडिएटली लाइक जस्ट लाइक अ मैजिक. पेरेंट्स आके फोन करते हैं, डॉक्टर साहब आपने दवाई दी, ठीक हो गया, इतना दिन से ऐसे पड़ा हुआ था, आज एकदम नॉर्मल हो गया मेरा बच्चा. I too feel happy and the parents too feel happy that my child has come back to the natural phase. Nothing will happen if you give your child wrong remedies. Why? क्योंकि कभी कभार हम सिलेक्शन में गलत करते हैं. ये लास्ट लाइन इसमें मैंने लिखा है. कभी कभार हम ज्यादा मेडिसिन भी दे देते हैं. इसमें क्या है, इसकी इफेक्ट इज नॉट सो डीप रूटेड दैट इट विल टोटली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्सन. वो क्या करता है, वो आपके सुपरफिशियल लेवल में जो इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन स्टेट क्रिएट करती है उसको रिलीफ कर देती है. सो आई कैन यूज दिस रेमेडी along with my constitutional medicine. जो acute state उसको combat करके I can give my constitution remedy and the patient will be completely cured by the BACH FLOWER along with my homeopathic treatment. So lastly, I would like to say I am being blessed that I am being able to use this remedy to the serving society, because this was being introduced to me by one of my uncles who was staying at Bhopal. He told me that Lipika, you start using this remedy along with the homeopathic drugs. I had no knowledge of it.
In 2016, he introduced to me, sorry, 2006, he introduced it to me, and 16 years I'm using this remedy along with our medicines and treating marvelously, giving healing effect to the serving society. Thank you. This is the last slide I put just for a glance of the whole conditions of all the bachelor group of remedies. Thank you. So thank you, ma'am, for this wonderful session. Actually, you have taken all the 38 remedies and a rescue remedy as well. So peoples were very enjoying your lecture. बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, तो पहले कुछ क्वेश्चन आज ले लेते हैं जो आपके व्यूअर्स ने पूछे हैं. And if you can on your video, if you're comfortable with the internet, so I would like to ask you some of the questions asked in the chat box. One of our viewer, Komal Joshi, said, "Hello, ma'am, and good evening to you." Dr. Neerav Thakkar, who was also a student of you and mine, good evening, ma'am. Ma'am, kindly share the dose and repetition. So one thing, even I want to know how to repeat the batch flowers and how to repeat it, and what were the doses we have to give. Yes, actually, being this, just a minute. Yes. I'm trying to open my video. Yes, ma'am, you are visible now. Yes, visible? Yes. So, what was it? Basically, it is an acute condition to be controlled. So, when a patient comes with severe state of panic, we usually, what I do, I add 10 drops of the medicine in 1 liter of drinking water and ask the patient to have it as long as the water is not exhausted. Before the exhaustion of the water, I add again 1 liter to it. And the whole day, the patient goes on using it. And this process, I have done it in many patients, specifically with Star of Bethlehem and rescue remedies. And also with other remedies according to the indications, have given me excellent results. So the next. And the other way also it can be used is, you can give 1 or 2 doses or repeatedly 3 to 4 doses as per requirement in 1 drum globules file, add 5 to 10 drops of the liquid medicine and ask the patient to have it as like our homeopathic medicine. Or you can add 30 ml of distilled water in that bottle, add 1 or 2 drops of the medicine and some rectified spirit just for preservation. And by giving stroke, downward stroke, succussion dose, in that way also have used the medicine, and it is an excellent way you will get the result. So this is the method we are even using for the water potencies, as well as in the plussing method we are using. Similarly, you can use the batch flowers. You might be comfortable with even the globules form. If the ma'am said frequently you can have a dose of 1 liter, and every time you can use the same water till it doesn't get problematic to the patient. So these are the methods you can use, and how frequently we can give the doses. For example, if it is acute, there is no frequency decided as per the susceptibility of the patient. As we use in an acute condition, we can do. Okay, ma'am, we are very glad Dr. Alpesha sir is watching our video right now, and he has sent a good, he says that this is a very good video and is very informative. So thank you, Dr. Alpesha sir, to be over there. If nobody, people who don't know about the sir is the principal of Pioneer Homeopathic Medical College in Vadodara. So he is the principal of me and Lipika ma'am, and very supportive persons to for such type of sessions. So thank you, sir, for being with us. And thank you, sir. Yeah, one more question is there, that how to differentiate that the patient is in need of batch flower remedies or a diluted remedies of homeopathy or a biochemical remedies. See, actually, I told you batch flowers are being used for acute conditions. More acute than where our homeopathic drugs can act. Many times, it is my personal experience being using it for a long time.
I found it that sometimes Ignatia doesn't work so better than the Star of Bethlehem. If I've used Star of Bethlehem, I could get more result than that of Ignatia. So wherever there's an acute state, acute crisis, think of this batch flower remedies in comparison to our homeopathic remedies or our biochemic remedies. Ma'am It is a Mansi, yes. complementary. It is a complementary to our system, I can say. Okay. Ma'am Mansi here has sent you a good evening. And Krupali Shah is asking, does batch flower remedies create any hurdle to the action of ongoing diluted remedies or constitutional remedies of our homeopathy? Still date, as per my personal practice experience, I would like to tell there is no such disadvantage or hindrance in the process of treatment because I don't usually use that remedy for a long time. It is only to be used to control the acute condition. If the condition is under control, then withdrawal is to be done. Depending on the susceptibility of the patient, of course, that will decide the dose and the frequency. And then can go for a repackaging remedy or intercurrently also it can be used. So it doesn't affect in the process of treatment. One more question from my side, ma'am. How long we Yeah. can give the batch flower to a person? For example, if a chronic case and we are inducing the batch flower as a complementary remedy with our ongoing constitutional drug, how long we can continue the same with the patient? See, I have used this for 1 year also, as per my experience, 6 months also. But intercurrently I have used, not continuously. Whenever there was a outburst of the situation which was going out of control, because these type of persons have a very strong negative temperaments. As the all negative temperaments I have discussed till day, because of that, intercurrently you need to control those states, or the patient will go for a psychiatric doctor taking the antidepressant drugs, which causes more harmfulness to the state in the process of our recovery even. So there is no fixed rule I can say. If a doctor can analyze the state that here it is required to control the acute condition, it can be used for a long, but I would not say don't use it continuously, because if you are using any drug continuously, your body gets adapted to it and you cannot prescribe it again and again. So better intercurrently you use it, maybe for 1 year, but बीच में छोड़ दीजिए जब वो stable है, फिर unstable हो रही है फिर use कीजिए as per the diagnosis of the patient's condition. Prognosis I will call it as also, whether it is going the reverse or the patient is going to the proper state of recovery, that can be done. Ma'am, Chetna Parmar is asking, is this medicines are only for the acute conditions or it works in the long continuous state of the patient as well? Yes, this is a very good question. Patients who are having mental states, psychiatric problem, long, prolonged psychiatric problem for years, there also we are able to use this medicine along with our medicine. It actually calms down the state, so our medicine can be given properly. My use it for acute, but somewhere I have used 10 to 15 cases, not more in my life. I've used for chronic, which along with the chronic drugs, it helped me to control the state and give the patient a very good result. Another question from the same viewer is that only is this medicines only work in the mental state or it even works about the mental symptom, the physical symptoms or the complaint of the patient? The first lecture when I was giving, I told psychosomatic. Yes. Everything starts with the brain and then it moves to the body. Yes. So psychological problems only when brooding and brooding and brooding moves on. Then we find the thyroid, then we find the diabetes, then we find the hypertension,
and then there are complications. So both are having irrespective relation to each other. It will be depending on the how much the patient is, the vitality has affected and how much cell to cell damage has occurred to the patient due to the mental trauma. If the mental trauma is too deep rooted, it will create physical disease. If the mental trauma is superficial, it will be coming and going out. So it will be easy for us to deal. Again, a full case taking is very much required. Thorough case taking along with the help of past history and family history, present complaint, and the life space is very much important. Being a homeopathic doctor, I would always request, please go through it and then use the remedy. Then perfect cure can be given to a patient without much hindrance in the process of treatment. Ma'am, another question. If not given the correct medicine, what will happen to a patient? For example, if the chestnut was required and we have given the Star of Bethlehem, it will create any problem to a patient or it will partially heal the patient? See, if it is in the group has to be taken care. Fear group, uncertainty group, partial will be taken care. Because mostly in the group, the drugs are being, uncertainty is a basic nature of that group. Fear is the basic nature of that group. So that can be taken care of. But my thing is, please don't overdose a patient. As like homeopathy, we are supposed to give single dose, single pill. In acute, multiple dose can be given, but tapering of the medicine should be there. 50 millisiemen can be used. Here also, my main concern is unnecessary overdose करके patient को क्यों drug disease तैयार करे. आपने गलत दिया हो या सही दिया हो is not the factor. आपने जब पहले दवाई दी है, आप observe करो 7 दिन बाद, call the patient, find if there is any change in the patient state, then only give the medicine, or you change your plan of treatment. That is a change your remedy. Why to continue with the remedy for a long? Yes, ma'am. Ma'am, Rajesh Sinha has asked, can we prescribe in globules? That ma'am has already answered the question. We can even use in the globules as well. Avinash Gupta ji has said, Madam, your lecture will be beneficial to all the homeopathic practitioners. So thank you, Avinash ji, and please share with the others as well so that many homeopaths can use this wonderful system and can enlighten and treat many patients of psychosomatic as well as psychiatric disorders. Dr. Manoj Patil is asking, which brand is reliable for this therapy medicines? I've been using medicine. It's a Bombay related company. It's the best thing from where I've been using, and it has given me excellent result. Even nowadays, Father Muller is also producing the drug, but I would recommend if you get medicine, that is best rather than going for any other. Manoj ji, even I am using St. George's company and it is also giving a good result. So you can actually go through the things and then decide. Ma'am has a better experience than me. Ma'am is advising medicine and even I am using St. George. So accordingly, you can find the better one for you. Whatever is available in your area and is feasible for you. St. George is also one of the, yes, Dr. Varsha, St. George is also one of the companies which is providing the drug. Because getting the drug, availability of the drug is also very problematic. Yes, ma'am. It's not available everywhere in every store. Only in Baroda, one store keeps it. Ma'am, so I was so in requirement of this remedy since the pandemic has started and I started using it. But the companies were not there to make me available these remedies. And then I have to order from Pune. So this is the main problem for BACH FLOWER, but you can ask for medicine for St. George. These are the companies who are creating the rare remedies and they will make you available. Don't worry, okay? One thing I would like to talk about regarding the COVID situation. Really, I feel blessed that I had known the remedy of rescue remedy
for treating the COVID patients. If this type of situation occurs in any time, any phase of you people, please use this remedy and find the efficacy of the drug. You will be confident that really it changes the pattern of the patient's condition of that hypersensitivity, fear of death, getting out of control. That can be done with a medicine of rescue remedy. It should be kept in every house. Yes. Yes, that I also advise from my side that rescue remedy should be there in every clinic, every person, so that this can give you a very fast results. Prevent any situation of life. कोई भी पैनिक को ये दूर कर देगा. इवन आई हैव हर्ड कि जो लोग बहुत लॉन्ग कंटिन्यू डिसीज से सफर कर रहे हैं और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होती है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एनी डिसीज, इवन देयर द रेस्क्यू रेमेडीज वर्क्स अ लॉट, because it again causes lot of state of what we say restlessness, uncertainty, ठीक होंगे कि नहीं, impatience. तो हमको ठीक होना ही नहीं है, 20 साल से यही बीमारी में है. Yes. Then impatience if you give, it will give the result. Yes. Obviously we have lot of scope because धीरे धीरे पेशेंट तो फिजिकल से फिर से मेंटल में ही चले जाता है. मेंटल से शुरू होती है, जाके फिजिकल डेवलप होती है, फिर से तो जाके मेंटल में ही पहुंच जाता है. मेंटल डिजीज में ही चले जाता है. मैं तो ठीक होना ही नहीं है, भगवान तो मेरे साथ ही यही काम कर रहा है. दिस इज द लास्ट वर्ड्स ऑफ अ पेशेंट. यस मैम. स्पेसिफिकली कैंसर पेशेंट, लूज ऑफ होप, यस, होपलेसनेस. Ma'am, another viewer, Hiral Solanki, has said it's a very wonderful and informative session. Dr. Neerav Thakkar says, thank you, ma'am, for this wonderful session. Dr. Falguni Thakkar, you know well her. Yeah, hello, I missed the initial part, but yes, indeed, Dr. Dear Lipika, ma'am, you are too awesome in the teaching. Keep it up with it, dear. And she asked me to call you for lectures. So ma'am will definitely ask Lipika ma'am to take some time from her busy schedule and create such lectures in as well, so that other students and practitioners can learn a lot from her experience. And if you have missed the initial part, this lecture would be there for the lifetime till my whole Homeo Health channel is there, so that you can see the video and please review how you felt about the video. I had used the rescue remedy SOS in my myocardial infarction and I've given 2 nice results. So yes, Falguni ma'am has used rescue remedy in her complaint and she has got a wonderful result. I was too relieved in my almost all the symptoms and followed by homeopathic medicine. So thanks a lot, ma'am. You have given your own experience and this will actually enlighten every viewers to use this remedy in their clinics. Ramesh Khosla says hi to you, ma'am. He might be knowing you, and they're very happy to see you on my channel. I would like to interpret. He's the person who introduced the system to me. Okay, he's the uncle you were talking about. Yes, he's a highly qualified electronic engineer from IIT Mumbai, and he's a very staunch homeopathic follower. I would like to tell, उनका पूरा बोगस सिनॉप्टिक की रटा हुआ है. Though he is not a homeopathic doctor, but he is a staunch follower of homeopathy, and he has given me lot of support for that. He has taught me the system. Lipika, you go through it. He gave his books to learn, and from there on 2006 onwards, I started practicing the system in my day-to-day practice. So thank you, Ramesh sir, for coming on my channel, and we are grateful कि आपने मैम को एडवाइस किया और मैम ने हमको एडवाइस किया और हमको भी एक न्यू थेरेपी के बारे में पता चला है. So thank you all the viewers. Thank you मैम to be here. बहुत आज हमें बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज था और बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज की होने के बावजूद भी लेक्चर बहुत अच्छे से गया है. थैंक यू मैम. आपने कुछ
मैंने एक ही बार आपको कहा था कि आई वांट यू टू बी ऑन माय चैनल फॉर बैच फ्लावर, एंड मैम ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली, क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आते थे लोगों के कि बैच फ्लावर क्या होता है, बैच फ्लावर कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। ऑब्वियसली मैम ने सारे ही पार्ट कवर किए हैं। 38 की 38 मेडिसिन आपको कुछ घंटों में सिखा दी, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। सो थैंक यू मैम, एंड इफ यू कैन स्पीक समथिंग अबाउट अवर होम्यो हेल्थ चैनल, so it would be great. Thank you, Dr. Varsha. I know you for a long time. You are an excellent homeopathic doctor, as well as you are doing for the community. Basically, we need to enrich our community of homeopathy, as well as to treat the serving community with the help of the medicines we are having. God has made us doctors to serve the community, and sorry, by your way, even we can reach to the near general public that what is the concept of homeopathy, what is the concept of batch flower, how we can treat them, and imbibe the confidence that people can get well with our system without having any interference with anything. Yes, ma'am. Thank you, Varsha. I God bless you. You even improve more and more, do more for the community. You're already a very good doctor. You're doing service to the community. You're already a very good teacher even. You're teaching in our college for a long time. You had been in my college where I was a principal also. There also you have worked so nicely. I had appreciated you at that time also. Thank you so much for calling me. And I could give whatever knowledge I had known to the people so that they can also imbibe this knowledge together and treat the patients accordingly. Thank So you, much. ma'am. I don't know I have done this many work or not, but thank you. If you feel that I have done something from my channel or from my teaching to the students and practitioners as well as to the patients, then I'm glad that I'm doing the right what Hahnemann has said to do a physician. And might be with all your guidance and other seniors' guidance, I get better views in the future to treat more and to teach more to the maximum people I can reach. Thank you, ma'am. Thank you so And much. one more announcement. Within a few days, one new video from my side on food and health qualities of the food is coming. So be there. आप जानते हैं मैंगो का सीजन चल रहा है, और हमें ये भी पता है कि मैंगो मैक्सिमम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि वो हेल्थ के लिए खराब है, ऐसा जाना जाता है। तो उसी के बारे में एक वीडियो है कि मैंगो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जितना भी ये वीडियो आपने पसंद किया है, शायद वो भी वीडियो आप पसंद करेंगे। और नियर फ्यूचर में हम एक और नॉन होम्योपैथिक लाइव लेके आने वाले हैं, and I'm dealing with it. Once it would be finalized, I'm going to launch it on the groups and all. And in the next month also, we are coming with a doctor who is dealing with the special child. वो भी अगर वर्कआउट हुआ तो डेफिनेटली हम ये 2 मई के अंदर हम ये 2 लाइव सेशंस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ रहिए, हमारे साथ रहिए और अपनी नॉलेज को, अपनी चीजों को एंजॉय कीजिए। कल ही अर्थ डे था, तो मैं मानती हूँ कि हमारी हेल्थ और हमारी पृथ्वी दोनों को ही बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। तो जैसे हम अपनी बॉडी के लिए ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने अर्थ के लिए ध्यान रखिए। प्लांट्स लगाइए, पोल्यूशन कम कीजिए, जितना हो सके उतनी बचत कीजिए वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की। और शायद, क्योंकि अगर हम हेल्थ वाइज अच्छे होंगे लेकिन अर्थ ही नहीं बचा पाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ, और मार्स में जाना इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो जितना हो सके अपने अर्थ के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए और दूसरों के बारे में सोचिए। यही मैसेज के साथ मैं चाहती हूँ कि थैंक यू मैम, आई टेक अ लीव फ्रॉम यू एंड विल डेफिनेटली कॉल यू इन द फ्यूचर. I've discussed one topic with the ma'am as well in for the future topic, but after a break we will definitely going to come with the Lipika ma'am Of course, again. I'm always with you, Vita. I'm always with you. Thank you, thank you. And we are starting the glimpse of all the batch flowers in the slide. Please visualize it and enjoy the beauty of batch flower. Thank you. They are beautiful flowers. Just enjoy them.
You need to click one by one. Is that visible, ma'am? Yes, visible. How beautiful the colors and Yeah. everything is there. How Dr. Batch actually got attracted, just imagine. This is The what I colors are so understood. attractive. Yeah. I am the biggest fan of plants and flowers, and I can understand if a person is actually attached to the nature, they will enjoy all these colors and the beauty Yes. of these drugs. Yes. They themselves have some different criteria in their feature. So these are all the glimpse of all the beautiful batch flowers, and I loved it. Thank you, ma'am, for taking so much time to prepare this glimpse of batch flowers, and this were too beautiful to visualize. Actually, when you told me, I was searching in the net again and again. Yes. And then I found somewhere. Then I took it. Then I made the small, and I combined it together. And then I asked you to go for the. Yes, ma'am. This was soothing to the mind and body and our soul. Thank you. How the remedies, how they are working, soothing to your mind, body, and soul. Similarly, their pictures are so too soothing for your mind, body, and soul. In between, I would like to say, if anybody has any confusion, they can contact you or me for using the drugs, because they are excellent as a complementary medicine in the process of treatment of organoids. Yes, so Thank you I'm so going much. to write the phone number as well as the Instagram ID of Lipika ma'am on my description box by tomorrow. So you can go through everything. And if you have any questions, either you can put on the comment box, either you can call me, or my Instagram ID is also there. My Facebook ID is also there. You can contact me directly. You can contact Lipika ma'am directly. If you face any problem related to prescription of the batch flowers, ma'am will definitely going to help you. Of course. Because yes, I'm so always for the system. yes, ma'am. Thank you, ma'am, for this kind help to the peoples and our community, so that we can help multiple peoples. जहाँ कुछ भी काम नहीं करेगा, वहां पर भी रास्ता है. तो आप ये मत सोचिए कि डाइल्यूशन ने काम नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं. तो हमारे पास और भी थेरेपीज हैं, उनको यूज कीजिए. अपने अपने विजुअलाइजेशन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाइए, ना कि एक जगह पे अटका के रखिए. बस इसी मैसेज के साथ आज की वीडियो से हम